Yes, welcome back. Dear children, today my topic is method of integrations. There are three methods of integration in your syllabus. One is integration by substitution. Second is partial fraction. Third, by parts, integration by parts. My dear children, my today topic is first method, that is integration by substitution. Suppose you have I equal to f of x dx. Then this independent variable may be changed in form of any other variable, say it is t. Let x equal to zt. Then you differentiate with respect to t. Then it becomes z dash t. Differentiation of zt is z dash t. Then what is the value of dx? It is g dash t d. Then I equal to, it becomes f of zt dx z dash t dt. Then this integration is possible by the direct definition as earlier discussed in previous exercise, that is exercise 7.1. Why we use this substitution? Since the integration of this function is direct, is not possible, so we use such type of substitution, then it becomes or it converts as the direct integration as earlier discussed. This is the basic concept involved in the substitution method. So we start some problems on the basis of this. Suppose you want to find the integration of, write the first integration, application of substitution method. You want to integration of 10x. Can you tell me what is the integration of 10x? Do you know? No sir. Differentiation of 10x is there. Integration of 10x is not there. हमने नहीं पढ़ा है. It may be written as sin x upon cos x dx. My dear children, you suppose this as you get the derivative of other function. One is f1x, f2x. If you suppose cos x as t, cos x को मैंने t ले लिया. अब आप बोलिए आपने क्यों लिया? क्योंकि मैं देख रहा हूं cos x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है, वो कैंसिल हो जाएगा. डिफरेंशिएट करिए, cos x का डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x. इट इज माइनस sin x. t का डिफरेंशिएशन हुआ dt by dx. Then what is the value of dx? Using cross product, dx is minus dt upon sin x. Now use this substitution in this expression. Sin x is as it is, cos x is t, operator dx is minus dt upon sin x. Sin x से sin x cancel हो गया. What is remaining? Integration of minus 1 upon t dt. Do you remember the integration of 1 upon t? That is minus log t. Base understood है. The base is e. What is the value of t? Minus log cos x plus c. So this is the way by which you find the integration of 10x. This is the application of substitution method. We use this method. 10x का direct integration हमारे पास नहीं है. So we suppose sin x as t, cos x as t. Then its differentiation is sin x, वो cancel हो गया. 1 upon t and 1 upon t with respect to t may be written as log t. t का value रख दिया. Sometime this minus sign may be written as log cos x to the power minus 1. That is 1 upon log x, 1 upon cos x. So it is called log sec x also. It is also correct. Minus log cos x may be written as log sec x plus c. This is the integration of, yes, 10x. C. Second.
इंटीग्रेशन ऑफ cot x, सेम ट्राई करिए, आपको करना है, अब मैं नहीं बताने वाला हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज cos x अपॉन sin x। नाउ यू थिंक, किसको आप t एज्यूम करिएगा? यस, किसको एज्यूम करिएगा? You suppose sin x as t and try to solve it. डिनोमिनेटर की टर्म को t ले लीजिए and try to solve. Write down on the notebook and please try to solve. Don't see like the picture. Take pen and write on your notebook. Suppose sin x as t. What happened? लिया sin x को t लिया। अभी सेकेंड स्टेप क्या करना होता है? जो एज्यूम किया है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए। sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ? cos x। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट देन dx इज dt अपॉन cos x। इतना तो आपने कर लिया, वेरी गुड। इससे चेक करते जाना है जो आपने किया। अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, i इक्वल टू cos x एज इट इज, sin x को t लिया, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? इट इज dt अपॉन cos x। cos x कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन t dt। व्हाट इज दिस? log t प्लस c। व्हाट इज t? log t means sin x plus c. So the integration of cot x is log sin x। हम इसको डायरेक्टली यूज किया करेंगे। सेम वे, कुछ भी नहीं था। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ विच मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। Got it? Now, you have third integration. Suppose you want to obtain the integration of sec x. अभी आप देखो sec x का तो कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप इसको t ले लीजिए। Let sec x is t। और इजी करना हो तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके sec x प्लस 10x से इंटू कर दीजिए। इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय sec x plus 10x. This is the technique. This is the way by which you make is more convenient. Direct sec x को t लेने से भी आएगा, but it kills your time. So suppose sec x plus 10x is equal to t. डिनोमिनेटर की टर्म को t एज्यूम कर लिया। अब डिफरेंशिएट करिए। What is the differentiation of sec x? Sec x into 10x. What is the differentiation of 10x? It is sec square x. It is dt by dx. Taking sec x common, यहां से sec x common ले लीजिए. What should be remaining? It is 10x plus sec x equal to dt by dx. Then form the value of dx. So dx may be written as dt upon sec x into 10x plus sec x may be written as sec x plus 10x. This is the value of dx. Numerator as it is sec x into sec x plus 10x. डिनोमिनेटर की टर्म को आपने t एज्यूम किया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? dt अपॉन
sec x into sec x plus tan x. Sec x into sec x plus tan x is sec x into sec x plus tan x cancel हुआ. Then it is dt upon t. Then what is this? This is log t plus c. What is t? T is log of sec x plus tan x plus c. So this is the way by which you get the integration of sec x. What is the integration of sec x? Log sec x plus tan x plus c. This is very useful and its proof is also important for examination purpose. They may ask in 2 marks. Prove that integration of sec x is log of sec x plus tan x. Clear? There are different form of this. Sometimes written as minus log sec x minus tan x. वो आप आइडेंटिटी यूज करके जनरेट कर सकते हैं if you have interest. Now we have third one. Same way. You have third formula. It is for integration of cosec x. You want to opt integration of cosec x. How you will opt? You multiply numerator and denominator with cosec x plus, देखो sec x का काउंटर पार्ट कौन था? tan x. cosec x का काउंटर पार्ट कौन होगा? cot x. So you multiply numerator and denominator with cosec x plus cot x. Take pen. Start writing on your notebook. Try to find out the integration of cosec x with your own efforts. क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैसे? cosec x प्लस cot x से. cosec x प्लस cot x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. इन अदर वर्ड cosec x प्लस cos x से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया. अभी सपोज करो डिनोमिनेटर की टर्म को t, इसको t सपोज करो. देखो क्या होता है. ट्राई टू राइट cosec x प्लस cot x को t लीजिए. लेट यस cosec x plus cot x equal to t. Differentiate with respect to x. What is the derivative of cosec x? Each and every child know about it. Minus cosec x into cot x. This is the differentiation of cosec x plus cot x. Cot x का differentiation minus cosec square x equal to dt by dx. Taking minus cosec x common, इससे minus cosec x common लीजिए. What should be remaining? It is cot x plus cosec x equal to dt by dx. Then what is the value of dx? It is minus dt upon cosec x into cot x plus cosec x को हम cosec x plus cot x भी लिख सकते हैं. ये वैल्यूज इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करिए. व्हाट हैपन? इसको लिखा t, dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपॉन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. मींस रिमेनिंग क्या होगा? ओनली माइनस dt. अपॉन कैंसिल हो गया, माइनस साइन कॉमन, दैट इज माइनस log t प्लस c. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया डियर चिल्ड्रन. इसको t लिखा, न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज, dx का वैल्यू डालने से ये टर्म कैंसिल हो गया. देन माइनस log t, सो इट इज माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c. इट मे बी रिटन एज log cosec x minus cot x plus c. Class 10 trigonometric identity.
को -1 ऊपर ले जाइए, रेशनलाइज कर दीजिए, देन यू गेट दिस, बोथ आर सेम. If they may be converted in form of sin cos also. So sometimes they write 1 minus cos x, that is 2 cos square x by 2, that is log cot x by 2 also, or minus log tan x by 2. If you want to convert in form of cot or tan, then you may. This is the integration of cosec x. On the basis of these concept, now we have the exercise called 7.2. We discussed some problem of exercise 7.2. We try to solve the exercise of 7.2 with the help of method called substitution method. Then see exercise 7.2, first problem. Read it. Integrate the functions in exercises. First, 2x upon 1 plus x square. Now, in general, हम कैसे पता करते हैं कि किसको t लेना है? जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, मतलब आपको अपॉन की टर्म को t ले लेना है. मीन्स सबसे मेन चीज प्रैक्टिस इस बात की है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जिसका एजम्पशन करना है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू dt by dx. Then what is the value of dx? It is dt upon 2x. So substitute this value, it becomes I equal to 2x upon t, dt upon 2x. 2x cancel. Then what happened? 1 upon t dt. That is log t plus c, integrating constant. Log t. What is t? T means 1 plus x square plus c. So my dear children, you remember in substitution method, you have to identify two functions. One of them is the derivative of other. जो डेरिवेटिव वाला है उसको आपको t एज्यूम कर लेना है, उसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है. सी दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. See the question number second. Log x whole square upon x. In question number second, you have log x square. Log x square upon x dx. Suppose, अभी देखिए सर, one function is log x, other is x. किसका डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन बना सकता है? यू नो, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो ये ऐसा कंसेप्ट मत बना लेना कि डिनोमिनेटर को t लेना है. नो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x होता है. सो हियर यू सपोज log x इक्वल टू t. लेट अब log x को डिफरेंशिएट करिए, 1 अपॉन x इक्वल टू dt by dx. Then dx equal to x dt. You substitute this value in this expression. Then what happened? It is t square upon x. Dx is x dt. X cancel. Then it is t square dt. T square का integration. T to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c. That is tq upon 3 plus c. What is t? Log x to the power 3 upon 3 plus c. This is the substitution method. Now, in next question, third, you take x common from denominator.
third problem. Tell me. 1 upon x plus x log x. x plus x log x से मैंने x कॉमन ले लिया. It may be written as x common means 1 plus log x. अब किसको t एज्यूम करिए? Let 1 plus log x equal to t. डिफरेंशिएट करिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. ट्राई करिए. 1 plus log x को t लीजिए, उसका डेरिवेटिव बनाइए, आपका सॉल्यूशन आएगा. इट इज 1 upon x equal to dt upon dx, that is dx equal to x dt. Use this value, then given function reduce that 1 upon t dt, x x cancel हो जाएगा. Then it is, yes, then it is log t. It is log of 1 plus log x plus c. So how you will solve the such type of problem? How you will applying the substitution method to find out the given integration? This is the way. I have discussed a problem. Dear children, this is the 50-minute class, so not possible to solve all problem, each and every problem. You have so many types of resources. You write and try to solve the problem. You will get the solution. Now I want to discuss some more problem. See the question number 19 please. मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो बच्चे अक्सर मेरे से पूछा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बच्चे मेरे से पूछा करते हैं. Generally, being a teacher, I know the children having the doubt or they have the confusion in such type of problem like question number 19. So I would like to solve the question number 19 in front of you. See, I equal to E to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1. this is the differentiation. अब आप डिफरेंशिएट करिए. सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e to the power 2x आएगा, 1 तो नहीं आएगा. तो हमें क्या करना है? न्यूमरेटर का जो e to the power 2x है, इसको मैंने लिख दिया e to the power x into e to the power x. I think you have no objection. As you know by law of exponent e to the power x plus x, that is e to the power 2x minus 1. It is written as e to the power x into e to the power minus x. E to the power 0. E to the power 0 means 0 or 1. Obviously it is 1. Similarly here e to the power x, e to the power x plus e to the power x into e to the power minus x dx. Taking common e to the power x common from numerator and denominator. E to the power x common लिया, क्या बचा सर? e to the power x minus e to the power minus x dx upon e to the power x, e to the power x plus e to the power minus x. ये जो कन्वर्शन है, this is the important. Now you think the derivative of denominator is numerator. If you suppose e to the power x plus e to the power minus x as t, इसको t ले लिया, then can you tell me what is the derivative of e to the power x? E to the power x itself, and e to the power minus x minus e to the power minus x equal to dt by dx. Means that e to the power x minus e to the power minus x into dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt. मतलब ये न्यूमरेटर का सारा टर्म क्या बन गया? dt, और डिनोमिनेटर का टर्म क्या बना सर? t. That is, it is nothing, it is log of t, and log of t, that is log of e to the power x plus e to the power minus x plus c. This is the solution of question number 19. Similarly, you have to solve the remaining questions, especially question number 32, 33 are the most important problem. To solve the 32 and 33 problem, you have the examples
example 6 on page number 302. You remember example 6, पेज नंबर 302 सॉल्व एग्जाम्पल है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में इससे एक नई प्रॉब्लम मिलेगा और सारी एक्सरसाइज आपसे बनेगी. नाउ यू हैव substitution method in trigonometry. So we use the trigonometric identities to solve the integrations. That is, we discussed the exercise 7.3. You recall all the trigonometric identities you learned in class 11. वो लिस्ट आपको रखनी चाहिए. How you will use? See the exercise 7.3. Please read the first question of exercise 7.3. Find the integrals of the functions in exercise 1 to 22. First, sine square 2x plus 5. Sine square 2x plus 5. Now you suppose the sine 2x plus 5 as t, then their counterpart cos x is required, so there is no cos x, so square is the obstacle. We use the trigonometric identity. You remember cos 2a is 1 minus 2 sine square a. Sine का conversion चाहिए. Use the transposition. It may be written as 2 sine square a equal to 1 minus cos 2a. याद करिए क्लास 11 के दिन आपने ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज की है. Sin square a equal to 1 minus cos 2a by 2. Use this concept here. क्या आएगा जी? I equal to sin square a 1 minus cos 2a. a था तो 2a आया. यहाँ 2a क्या हो जाएगा? 2 का इंटू कर दीजिए. 4x plus 10 upon 2. I think you all are able to understand this. क्या किया समझ आया क्या? वो कंसेप्ट यूज कर दिया. अब सर 1/2 कॉमन आ गया जी. 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx. What is the integration of 1? Integration of 1 is x. Integration of cos 4x plus 10. You recall the formulas. It is sin 4x plus 10. And the coefficient of x is 4, so it will be in denominator plus c. Check result. This is the result. It may be written as x by 2 minus sin 4x plus 10 upon 8 plus c. So you may solve the problem of 7.3 exercise on the basis of trigonometric identities. Now you have the question number 2nd, 3rd, 4th and so on. I would like to discuss another problem called question number 3rd or question number 2nd as you want. Second पहले कर लेता हूँ, फिर थर्ड करता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए. See the question number 2nd of exercise 7.3. In this question, you want to find the integration of, yes, Sin 3x and cos 4x into cos 4x. their function is in product fx into gx. We did till now we don't know the formula for the product of two functions, so we may convert in form of addition or subtraction. It may be written as 1 upon 2. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, लार्ज एंगल को पहले लिख लिया, 2 sin 4x into sin 3x. I think 2 से 2 cancel as it is. Now you recall your previous year concept. Whenever you have two cos A sin B, it is nothing
it is sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B. So it is 1 upon 2. Use this concept. Integration of 2 cos A sin B. क्या आएगा जी? sin A plus B, that is sin 4x plus 3x minus sin A minus B, that is sin 4x minus 3x. dx remains as it is. Then what happened? 1 upon 2, it is sin 7x minus sin x dx. My dear children, what is the integration of cos sin 7x? It is minus cos 7x, x का कोफिशिएंट अपॉन में आया, sin x का इंटीग्रेशन minus cos x, so it becomes plus. Check the result. This is the way by which you solve the exercise 7.3. Similarly, you have third problem, fourth problem, fifth problem. You have to solve them applying the concept. Now I want to discuss the question number 22 of this exercise. Generally, this is I am solving on the basis of my own experience. We know the children are able to solve all the exercise, all the problem of exercise 7.3, but they generally ask the question number 22. That's why I want to discuss the question number 22 with you. See, what is the question number 22, dear children? 1 upon cos x minus a into cos x minus b. This is the most important question of this exercise. Both are cos. My dear children, you find the difference of angles. Angles का difference find करिए. x minus a से x minus b subtract करके बताइए क्या आएगा. You subtract the angle x minus a and x minus b. Angle बस का difference बनाना है, जल्दी करिए. बताइए क्या आएगा. यदि मैं x minus b से x minus a सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आने वाला है? a minus b. सब्ट्रैक्ट करिए. माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल प्लस a. सो वी मल्टीप्लाइंग दिस होल क्वांटिटी 1 अपॉन साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया. साइन a माइनस b से मल्टीप्लिकेशन करना है. इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सो वी राइट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. क्लियर जी? I इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ साइन. इट मे बी रिटन एज x माइनस b माइनस x माइनस a. x माइनस बी से x माइनस ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी तो आना है, अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी. माई डियर चिल्ड्रन, यू रिमेंबर sin a minus b is, what is the formula? Sin a cos b minus cos a sin b. Use this identity and expand the numerator. Then what happened? The numerator tells us it breaks like this: sin a, that is sin x minus b, cos x minus a, yes, minus cos x minus b sin x minus a. ये न्यूमरेटर का टर्म आया. डिनोमिनेटर को ब्रेक करके लिख दीजिए, मींस दोनों के अपॉन में सेपरेट लिख दीजिए. x माइनस ए cos x माइनस बी, इसके अपॉन में भी आएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx.
Here, cos x minus a cancel out. Here, cos x minus b cancel out. Then, what should be remaining? See, I equal to 1 upon sin a minus b outside the integration. What is the first term? Sin x minus b upon cos x minus b, that is tan x minus b. And sin x minus a upon cos x minus a, that is tan x minus a. And you remember, the integration of tan x is log sec x. आज ही प्रूव किया. अभी आपने आज का सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. द इंटीग्रेशन ऑफ tan x is log sec x. यूज दैट कॉन्सेप्ट. क्या आएगा सर? इट इज 1 अपॉन sin a minus b. इंटीग्रेशन ऑफ tan x minus b, it is log sec x minus b. x का कोफिशिएंट 1 है, नो प्रॉब्लम. माइनस tan x minus a का इंटीग्रेशन log sec x minus a plus c. It may be written as 1 upon sin a minus b log sec x minus b upon sec x minus a plus c. Check the result. This is the result of question 22 of the exercise 7.2. Clear, sir? So on the basis of this, you have to solve the exercise called 7.3. yes 7.3. Now we have, on the basis of substitution method, we have another concept called integration of some particular form. On the page 307, you say integrals of some particular function. You want to find the integrals of some particular functions. First one is integration of 1 upon x square minus a square. It is very easy. By trigonometric identity, their proof is available in your book. You prove it with the help of the problem I have discussed. 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. डियर चिल्ड्रन, ये लर्न होने चाहिए. इनको प्रूव करिए और लर्न करिए. 1 अपॉन a square minus x square dx. It is nothing. It is 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c. Third, integration of x square plus a square dx. It is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. लिखिए इनको. We use directly. इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे. If you want to prove, then prove them. They are very easy, like the previous exercise 7.1, 7.2. Third one, fourth one, fifth one. Integration of 1 upon root over 1 minus x square. Integration of 1 upon root over 1 minus x square. Integration of 1 upon root over x square plus a square. There are total 6
integrations of particular functions. What is this? It is nothing, it is log of x plus under root x square minus a square plus c. What is this? This is sine inverse x upon a plus c. And what is this? This is log of x plus under root x square plus a square plus c. Check the book. These are the integrations. If you have interest, then you will be proof. The proof is given in your book. Try to prove them. Now I want to discuss the problem on the basis of this. That is the exercise 7.4. Clear? ये फॉर्मूले आपको लिख के रखने हैं अपनी नोटबुक पर. इनका यूज करके हम लोग 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. exercise. Please read the question number first. Integrate the functions. First, 3x square upon x to the power 6 plus 1. See the problem. 3x square upon x to the power 6 may be written as x cube whole square plus 1. You ask me why you write x cube whole square, since differentiation of x to the power 3 is 3x square. So that's why we suppose let x to the power 3 is t. Differentiate करिए 3x square dx equal to dt. Cross product कर दिया. 3x square dx, that it may be written as dt upon t square plus 1 square. And you see the list of formula 1 upon x square plus a square, it is 1 upon a. A का value 1 है, so no need to write. Tan inverse x upon a, that is t upon 1 plus c. What is the value of t? T is x to the power 3 plus c. Check result. On the basis of this, you are able to solve till question number 9. Direct formula hai. Now I want to discuss second type of question of the exercise. That is question number 10. 10, 11, 12, they are second type of problem in the exercise. See the question number 10. 1 upon under root x square plus 2x plus 2. See all the identities, all the formulas, all the particular integrals. You do not have such type of form. So use the completing the square. ये जो expression है, इस completing the square से आपको इसे convert करना है. So this function, इसको आप अलग से लिख लें साइड से. x square plus 2x plus 2. It may be written as x square plus 2x into 1 plus 1 plus 1. The first three terms becomes x plus 1 whole square plus 1. That is, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है, इसको 1 upon अंडर रूट x plus 1 whole square plus 1 square लिख सकते हैं जी. क्लियर? नाउ यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. x plus 1 को t ले लीजिए. It means that dx equal to dt. So it becomes dt upon under root t square plus 1 square. See the formula. 1 upon under root x square plus a square. It is log t plus under root t square plus 1 plus c. Substitute the value of t.
then it becomes log of x plus 1 plus t square, वैल्यू रख के एक्सपांड कर दीजिए, देन इसका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c. दिस इज द आंसर. So 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, same problem. See the 16th onward, 16, 17, 16 to 23, they are the most important question, dear children. Over. Sixteenth to last problem, they will ask a question of indefinite integral from this section. Generally they ask the question 17, 18, 19 like this. So please tell me what is the 16th problem? 4x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3. Numerator is fx, denominator is gx. See the derivative first. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहला काम आपको ये करना है, ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है इसको एज्यूम करके देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए क्या न्यूमरेटर फॉर्म हो रहा है. यदि हाँ तो इससे इजी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता. लाइक दिस, इफ यू सपोज लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3st डिफरेंशिएट करिए, इट बिकम्स 4x, x का 1 dx equal to dt. That is न्यूमरेटर का जो टर्म था वो फॉर्म्ड हो गया. So it is dt upon root t. Then it is 1 upon root t, integration of root t, that is t to the power minus 1 by 2 dt. Root means 1 by 2 का पावर minus 1 by 2 फॉर्म किया, इसको इंटीग्रेट कर दो, t to the power minus 1 by 2 plus 1, that is plus 1 by 2. So it becomes 2 root t plus c. What was t? T is under root x 2x square plus x minus 3 plus c. Check करें रिजल्ट सर. Now you have the question number 17, 18, 19 till 23. They are the most important. One of them I want to discuss to you. Tell me. 70. X plus 2 upon under root x square minus 1. अभी प्रॉब्लम है सर, इसको यदि हम t लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 को, तो x प्लस 2 तो नहीं आएगा. तब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, इसको लिख लिया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा. अब इसमें तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेना है जी, मीन्स 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, दैट इज x dx इक्वल टू dt by 2. इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला है. सो व्हाट हैपन, इट बिकम्स dt अपॉन 2 रूट t प्लस, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 2 कॉमन, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. 1 अपॉन 2 कॉमन, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन अभी किया आपने, क्या आएगा, 2 रूट टी प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन व्हाट इज द आउटकम, 2 कैंसिल. व्हाट इज टी? टी इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. चेक करें रिजल्ट सर. क्लियर? दिस इज द वे by which
you solve the remaining questions. I want to write the hint for question number 18. ऐसे इसमें तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है. सो कैन यू टेल मी द क्वेश्चन नंबर 18? 5x minus 2 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square. You know, numerator 5x minus 2 is written as a constant into differentiation of the polynomial without exponent of denominator, that is ये, plus a constant b. आपको ये ब्रेक करना होगा न्यूमरेटर को, मीन्स इट इज a into 2 plus 6x plus b. 5x minus 2. Now you compare the coefficient of x and constant. जैसे x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो 6 से इक्वल टू 5 मिलेगा, एंड कांस्टेंट टर्म 2a plus b equal to -2. You solve the equation and got the value of a and b. You write 5x minus 2 as this, then you break like the previous one. So you will get the solution. This is the way by which you use the substitution method. Dear children, you have 3 exercise 7.2, 7.3, 7.4 to solve with their examples. So please try to solve. Jai Hind, Jai Bharat.